another word to describe a person strong enough to tolerate everything and soft enough to understand everyone. It is indeed a high blessing to be the first and last to witness the beginning and the end of the life. In ancient times, the hospitals were horrible looking places, and the sick were looked after at home. Girls were not preferred to take care of men. One who gave care was looked down socially. Here the sick was still closing like brilliant and magic. People used to believe that that takes much more than the healthcare facilities. During this dark period of nursing, on 12th of May 1820, a baby girl was born in a small town called Florence in Italy. She was the daughter of well-to-do parents but she preferred to avoid it. Florence was active in philanthropy, ministering the sick, and poor in the village near her from a very young age. When she determined to pursue her true calling, Nightingale approached her parents and told them about her ambition to become a nurse. They were not pleased and discouraged her in many ways. After much of the struggles with her family, Nightingale enrolled herself as a nursing student in Lutheran Hospital, Germany in the 1844. She returned to London after her studies and took a nursing job in Middlesex Hospital, London. She was highly dedicated and interested in her performance, and hence she was promoted as a superintendent within a year. In October 1853, the Crimean War broke out between England and Russia, which caused massive casualty and injury to the soldiers. Indian soldiers were taken to various military camps, and England was in a role for the relief of the injured soldiers. England received a letter from the Secretary of War in May 1894 asking how to organize corps of nurses, take care of the sick, and calling soldiers to the broadside. Indeed, those who were armed, maybe considered even 54 nurses, and staying with them to Turkey, where her duty was assigned. In Turkey, she was shocked to see the overcrowded, unhygienic hospital. ऊंचाई के शिखर से पहुंची हुआ हर जगह मेरी परछाई है। अब वक्त बदला है और यहाँ हर किसी को मेरी जरूरत समझाई है। कई वर्ष पहले बस जीवन तक सीमित थी मैं, अब दुनिया में बदलाव आ चुकी हूँ। ऐसी को भी हासिल कर चुकी हूँ। दोस्तों से लोगों से जुड़ गई हूँ। पहले फर्श से आंखों में उजाला करती थी, आज दवा से भी दर्द को कम करना चाहती हूँ। मैं एमएससी को भी हासिल करती हूँ। हिंदी और कैपिटल की नींव को समझती हूँ। रिसर्च में भी उपलब्धियाँ पा चुकी हूँ। फिर इंजेक्शन टैबलेट लगती नहीं, अब टेक्नोलॉजी को भी मैं समझती हूँ। आज कॉलेज भी अधूरे हैं मेरे बिना, क्योंकि आगे की पीढ़ी के ज्ञान में भी सहयोग आज कहाँ दुनिया नहीं है। नर्स, प्रोफेसर, एडमिनिस्ट्रेटर, काउंसलर, रिसर्चर, माँ के दर्द और बच्चे की चहचहाट से जो देती हूँ, मुझे वेबसाइट के लिए विद्यार्थी नर्स कहते हैं। जहाँ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी किसी की किताबों से जुड़ती हूँ, मुझे मेडिकल सर्जिकल नर्स कहते हैं। जब किसी के इमोशंस और साइकोलॉजी से जुड़ती हूँ, मुझे मेंटल हेल्थ नर्स कहते हैं। जहाँ लोगों के घरों से बीमारियों को दूर करती हूँ, तो मुझे कम्युनिटी हेल्थ नर्स कहते हैं। उन सरहदों के बीच जो किसी की मुस्कुराहट बनती है, मुझे मिलिट्री नर्स कहते हैं। बस अपने देश में ही नहीं सिर्फ, बल्कि फॉरेन में भी पंख अपने उड़ा बैठी हूँ। देख रहे हो,
एक चिराग लेकर जो निकली थी, कहाँ तक मैं इसका प्रकाश फैला चुकी हूँ।